I always gravitated towards like Islamic. Yeah. There was something about like I don't know any of the texts, मैं नहीं पढ़ता, ठीक है, Mhm. मतलब लेकिन एक sense of ownership होती है when it comes to like Islamic philosophy, because that's like हम लोग सारे ईस्टर्न हैं, हम सब लोगों ने यहीं से रेज हुए हैं. Actually मैं होता था दुबई में भी और टर्की में भी. I haven't lived in a Western country, Yeah. but I kind of have a feel like what Eastern people would be like if they try to follow Western philosophy. Yeah. Why is that the case? हम लोग करते क्यों हैं? तो ये वाला सवाल मैंने तुमसे इसलिए पूछा था to like pick your brains. जब ईस्टर्न फिलोसफी की बात होती है ना, तो Islamic philosophy is not considered in the ambit of Eastern philosophy. Exactly. Yeah. So by Eastern I meant Islamic. Yeah. That's so true. Eastern would be कि वो Chinese पुराने जो Lao-Tzu वाली philosophy, Confucius हो गया, या फिर Buddhism हो गया, Yeah, nice. Taoism, that would be considered as Eastern philosophy. Yeah, they're ancient though, right? Yeah, they're like very ancient, old. yeah. They're very old. मतलब Hinduism is considered as the oldest religion on earth. Yeah, And, it is definitely. Even there is a Hindu philosophy. In fact, जो Buddhist philosophy है और जो Hindu philosophy है, they're अच्छा, very it much. stems from that. जो Buddhist philosophy होती है is actually. Yeah, I would say यार Buddhist philosophy, Buddhism is in itself is a bit more secular. वो अलग बात है कि फिर Buddhism को लोगों ने as a religion follow करना शुरू कर दिया. अच्छा. लेकिन Buddha himself, अगर वो उसके पास option होती है कि do you want to create a religion or not, तो वो यही कहता कि यार नहीं, Definitely. यही कहता कि यार मैंने कोई दीन या मतलब कोई religion नहीं create करना. कोई religion नहीं create It करना. was just his way of life, जिसको लोगों ने थोड़ा प्रिस्क्रिप्शन वाली साइड पे लेके आए कि यार ऐसे करो फिर ऐसे करो, स्टेप बाय स्टेप प्लान बनाया और फिर एक रिलीजन बन गया. अच्छा, वो एक religion बन but गया. for him it Is was it like inevitable, man, for religion to fall under philosophy? Is it like that? Is it? आप कोई philosophical idea लेके आते हो and then it automatically becomes like इतना following उसकी बढ़ जाती है कि वो एक religious belief की तरह ये लोग फिर मानना शुरू हो जाते हैं. यार अगर तो ये आप history में कहते हुआ हैं, है? I mean that's where I'm coming. अगर आप तो कहते हैं ना कि यार I want to come up with a philosophy जिसको लोग adopt करें, so that becomes very selfish of a philosopher from the start. Okay, it's never the philosopher's intention. I mean, there are some philosophers who had intentions to Arrogant yeah. pricks. तो उसका फिर रिजल्ट आपको मिलता है. आई थिंक अगर कोई फिलॉसफी दुनिया में थी, टॉकिंग अबाउट कॉन्टिनेंटल फिलॉसफी, जिसको लोगों ने एक्चुअली अडॉप्ट करने की कोशिश की, ये नहीं कि किया बिल्कुल 100% एक्यूरेट, क्योंकि जब हम अडॉप्ट करने पे आते हैं तो वी नॉट एक्यूरेट. मैं आपको आपका सेल्फ इम्प्रूवमेंट का 10 स्टेप का प्लान दूंगा तो यू नॉट गोना फॉलो इट एक्यूरेटली, राइट? तो उसी तरह जिस फिलॉसफी को एक्यूरेटली लोगों ने अडॉप्ट करने की कोशिश की, दैट वुड बी मार्क्सिस्ट फिलॉसफी, मार्क्सिज्म. अच्छा, जिसमें मार्क्स ने स्टेप बाय स्टेप आपको एक प्रोसेस बताया कि यार ये प्रोसेस आप फॉलो करें तो किसी हद तक आपकी सोसाइटी के अंदर इक्वालिटी आ जाएगी, सोशलिज्म आ जाएगा, फिर सोशलिज्म से कम्युनिज्म आ जाएगा, एक यूटोपियन सोसाइटी की उसने जो पिक्चर पोर्ट्रे की है आपको कि यार दैट वुड बी अ परफेक्ट सोसाइटी टू लिव इन. उसके बाद उसने आपको स्टेप बाय स्टेप मेथड बताया दैट पीपल ट्राई टू फॉलो मोर देन एनी अदर फिलॉसफी दैट वाज ट्राई टू फॉलो. और उसकी कॉन्सिक्वेंसेस आपने देखी, मिलियंस ऑफ डेथ्स ऑफ पीपल एंड a lot of chaos, and then ultimately return to capitalism. Ultimate return to capitalism. But would क्या कहते हैं, like Islam वगैरह भी जो है, मतलब Islam is also like a philosophy, or is it a religion, or is it like, can you compare it? यार first of all जो इस्लाम है as we know it, क्योंकि शुरू में आपको पता है कि what is Islam, it's Quran and Sunnah, right? And then there are people who try to explain us what Quran and Sunnah actually meant, because there was a lot of time gap. और उस टाइम गैप के अंदर इस्लामिक जो एम्पायर थी वो अपने पीक पर पहुंची, जो बायसाइड्स का टाइम था, अब्बासियों का टाइम था. उस टाइम पर पहली दफ़ा ग्रीक फ़िलासफ़ी जो है वो किसी और लैंग्वेज में ट्रांसलेट हुई. वो हाँ, was that like one of the first times that like Islam got a taste of philosophy? Yeah. Philosophy. It was the first time that the modern world or that medieval world got a taste of philosophy. अच्छा. Because before that जो philosophy थी वो ग्रीक्स की philosophy वो ग्रीक ज़बान में पढ़ी हुई थी. पहले वो अरबिक में ट्रांसलेट हुई, उसके बाद फिर वो
इंग्लिश में ट्रांसलेट हुई। अच्छा फिलॉसफी की जो मैं बात कर रहा हूँ, तो या मतलब people who tried to explain us Islam at that time, they were aware of philosophy. They had a deep understanding of philosophy. Aristotle जैसे philosophers को उन्होंने कोट भी किया। उनका अच्छा उनको कोट भी किया। मतलब उनके मेथड सीखे कि यार किस तरीके से एक चीज़ को डाइसेक्ट करते हैं, उसके अंदर अच्छा। से लॉजिक क्या होता है, क्योंकि जाहिर बात है अल्टीमेटली व्हेन यू आर ट्राइंग टू कम्युनिकेट नॉलेज टू पीपल you have to give them some sort of logic, right? Reason. Reason. Yeah. But like, wouldn't the reason for Islamic philosophers be reason behind everything is God? I mean, when you are an Islamic philosopher, या कोई भी ये जैसे medieval time में Christian philosophers थे, तो yeah उनका जो basic the unmoved mover होता है, that's always God. There is always God. There is तो always जो God से start करते हैं कि यार there is this supreme entity, और Nice. उसके आगे फिर वो अपनी philosophy start करते. That's the basic axiom of their philosophy. अच्छा, which is basically foundation में हमेशा Yeah. there's always God. जैसे आप कोई mathematical model create कर रहे हो, even आप अपने Excel के ऊपर काम कर रहे हैं, कुछ भी कर रहे हैं, you create some sort of basic axiom ना, हाँ कि हाँ। this is how things are, this is the fact. और इस फैक्ट के ऊपर फिर मैंने मॉडल क्रिएट करके चीज़ों का रिलेशन देखना है, कोरिलेशन देखना है, एवरीथिंग. सो दैट वाज द एक्सियम ऑफ क्रिश्चियन एंड मुस्लिम फिलोसफर्स, देयर इज अ सुप्रीम एंटिटी कॉल्ड गॉड. अच्छा, oh there are Christian philosophers that must have like put religion as well into the mix as well. अच्छा हाँ, yeah, definitely man, ऐसे भी हुए होंगे. But it's good, it's like काफ़ी अच्छी बात है ये. I've always been like, I've always मतलब एक patriotism नहीं होती, आपको अपनी country की भी होती है, आपको अपने religion का भी होता है. You want it to be like the one it's like that has the answers to everything, you know. I think it's very simple, क्योंकि अगर आप if you put like God in like the concept मतलब as a foundation, फिर आपकी काफ़ी questions और answers मेरे ख्याल में clear हो जाते होंगे. True. Is that actually the case though, philosophy में? I mean again, I wouldn't tell what's the case for everybody. Because, you said but I can at least talk for myself, and for myself it was definitely the case, because usually देखो साइंस के अंदर जब साइंस अपनी तहकीक के अंदर, अपनी इन्वेस्टिगेशन के अंदर डीप डाउन जाती है, तो अल्टीमेटली कोई फिजिसिस्ट होगा दैट्स हु इज़ ट्राइंग टू मेक सेंस ऑफ द यूनिवर्स अराउंड हिमसेल्फ, कि यूनिवर्स की लॉज क्या हैं, रिलेटिविटी क्या होती है, आइंस्टाइन जैसे वो भी एक पॉइंट पे जाके कहेंगे कि यार देयर इज समवन हु क्रिएटेड ऑल दिस, देयर इज समवन हु क्रिएटेड ऑल ऑफ दिस. हाँ, लेकिन कुछ लोग होंगे जैसे हमारे यहाँ प्रवेश बॉय जैसे लोग कर लेते हैं, जिन्होंने अगेन फिजिक्स पढ़ी है, लेकिन दे डिडंट रीच दैट एक्सट्रीम जिसके ऊपर जाके वो एकदम से क्यूरियस ही रह चुके हों. वो दे जस्ट केम अप विद देयर ओन आइडियोलॉजी, एंड लॉट ऑफ साइंटिस्ट, these people, they become secular. वो क्योंकि वो अपनी नॉलेज के ऊपर एक फुल स्टॉप लगा देते हैं. अच्छा yeah, tell me more about that. That was the last thing we were talking about, was that full stop. Okay, what is that full stop? के उसके बाद like no one actually like does anything else. अच्छा, कॉन्टिनेंटल फिलोसफी के जो फुल स्टॉप है वो कहते हैं कि यार लुडविग विटगेनस्टाइन एक फिलोसोफर था जिसने लगाया. This was your thesis you did on him. So what Wittgenstein said was कि हमारी जो लैंग्वेज है, ह्यूमन लैंग्वेज, इसके अंदर गैप्स हैं. मैथमेटिक्स की वो एग्जांपल देता है कि वो एक परफेक्ट लैंग्वेज है, उसका एक सब्जेक्टिव मीनिंग है, ऑब्जेक्टिव मीनिंग है, सॉरी. हाँ सही. कहीं पे भी जाएंगे 2 + 2 = 4, 7 + 3 = 10, एनीवेयर यू गो, किसी भी ज़ुबान में आप इसको ट्रांसलेट कर लें, as long as you're getting the real message behind the thing. So it's gonna remain objective, it's gonna remain true no matter what. लेकिन जो ह्यूमन लैंग्वेज है, जिस तरह मैं और आप बात कर रहे हैं, आप सवाल करते हैं, and I try to understand what you actually mean by what you're asking, right? Yeah, I mean like most of my questions might not be like received the way I want to say it. तो basically वो signals और signs होते हैं जिनको मैं translate करता हूँ. अच्छा हाँ then I understand your question, and then I try to come up with explanation that's again signs and signals. और हमारी कम्युनिकेशन के अंदर हमेशा एक गैप आ रहा होता है, राइट? तो वो एग्जांपल ऐसे देता है कि यार एक साइड पे फ़ोन की एक साइड पे दुनिया का सबसे बेहतरीन पेंटर बिठा दो, जो कि एक चीज़ को देख के खूब वैसी पेंट कर देता है, और दूसरी साइड पे आप दुनिया का सबसे बेहतरीन ओरेटर बिठा दो, जो चीज़ों को बहुत डिटेल में एक्सप्लेन कर सकता है. अब ओरेटर के सामने एक दरख्त है,
और पेंटर किसी और शहर में बैठा हुआ है, उसके सामने कुछ भी नहीं है, कैनवस है. अब वो ओरेटर उसको एक्सप्लेन कर रहा है कि यार अच्छा ये दरख्त इस तरह से है, इसको इस तरह से पेंट करो, इस तरह से ड्रॉ करो. तो ही कैन नेवर ड्रॉ एन एक्यूरेट पिक्चर ऑफ दैट ट्री बिकॉज लैंग्वेज के थ्रू उसको पिक्चर कम्युनिकेट हो रही है, एंड द लैंग्वेज इज गोना create gaps, right? The language is gonna create gaps. Exactly. तो वो कहते हैं कि यार लॉजिकल स्ट्रक्चर जो है वो किसी चीज़ की, एक बिल्डिंग की फाउंडेशन की तरह ना, उसके सरिये की तरह एक ज्योमेट्रिकल सा स्ट्रक्चर है जिसके ऊपर हम पूरी बिल्डिंग बनाते हैं, जिसके अंदर मूवेबल पार्ट्स भी होते हैं, सब कुछ होता है. अच्छा नाइस. तो वी कैन एक बिल्डिंग को देख के आप किसी हद तक कह सकते हो कि अच्छा इसके अंदर नीचे ये स्ट्रक्चर है, या फिर कोई और आर्किटेक्चरल. Yeah, I mean like वो is a good example, like वो blueprints वगैरह जो होते हैं for buildings. So that's actual logic. लेकिन बाकी सारा इंटीरियर जो सारा कुछ आ गया, हमने ऊपर क्या क्या डिज़ाइन कर दिया, that's all subjective, that's all movable, right? Okay. तो हम किसी हद तक तो लैंग्वेज के थ्रू intuitively grab कर सकते हैं कि यार what is the reason behind, what is the logic behind this whole structure of things, but it's always going to be subjective. It's always going to be subjective. और जिसकी वजह से वो कहता है कि a lot of questions regarding metaphysics, जैसे soul, mind, body relation और destiny, free will, इस तरह के जो questions हैं, they are nonsensical. They don't make any sense because they don't have a complete answer. It's just that these questions arise because of the gap in human language. अगर वो gap खत्म हो जाए तो these questions would not be there at first place. So what, like you're saying basically there's a way mathematics can answer those questions? No, it's not that. It's just that the limits of our language are the limits of our mind. That's the gist of his. That's actually a very good concept. So our language has a limit, and therefore our philosophy and our minds and our experiences, our understanding, it has a limit just because of our language. Just because of our language. That's very true. Like mindsets change as well, na? If you're speaking in English or आप उर्दू में बात कर रहे हैं, तो like उर्दू में there's many ways to describe something, or different approaches to describing the same thing. ऐसे ही. Or English में it's like it could be straightforward. अगर आप bilingual हो, in fact psychology भी ये कहती है कि जो लोग bilingual होते हैं, जो वो जब एक लैंग्वेज से दूसरी लैंग्वेज पे शिफ्ट करते हैं, तो a part of their personality also changes. A part of their understanding also changes. Okay. So that's pretty crazy. So language is a very powerful thing. So since that is the full stop. I mean, Wittgenstein को कोई जवाब नहीं दे पाया. उसके बाद आप जो भी question deep question अपनी तरफ से करेंगे, you can just come up with Wittgenstein philosophy on everything, and you can say, yeah, it's just the question is there at first place because we cannot understand our language properly, and there are gaps in our language. Okay. So that's the full stop. No one so far has been able to answer Wittgenstein, and my thesis would be on this particular point that the end of continental philosophy is the beginning of Eastern philosophy, which is way older than the continental philosophy. Which is way, and by Eastern you mean Chinese and Chinese, Buddhist, because Buddhist. Talking about, have you heard about Taoism? Like I know it, but I haven't read any scripts or anything. So there's this book called Tao Te Ching. Okay. It's one of the oldest texts that you can find out there. Nice. Over 4,000 years old text from China, and the way it starts is, the Tao that can be told is not the eternal Tao. The name that can be named is not the eternal name. So basically, there was also this paradox of Eastern philosophers that they were trying to communicate something that they themselves claimed is not communicatable, and they were trying to explain something that cannot be explained. Yet, not directly but indirectly, there is a message. There is a hidden message that they are able to communicate to your mind, and they are able to give you this experience where you. But this philosophy you're saying is much older. Than the person that you just mentioned. Yeah, than the continental philosophy. Yeah. So how is the end of that the beginning of this? This has been like pre-existing. For me, I mean, if you read Tao, I mean, the way he starts, it is almost like he knew the limits of the language, right? He knew that the limits of our language are the limits of our mind, and he acknowledges. I mean, from the very beginning of the book, he acknowledges that fact.
Isn't it amazing, right? True. And he says, I cannot explain it, yet I'm just going to utter words that that might help you, because that might help. Yeah. Nice. It's good, but there still needs to be like a final answer, man. I mean, there are no final answers. I mean, you cannot. No, I come get up it. Like, but it's like it's very eye opening, man. मतलब you should definitely मतलब हर चीज़ को अपना जो है ना मतलब like beliefs को थोड़ा मतलब your own sense of belief को आपको थोड़ा sideline पे करके Yeah. you have to like look into this kind of topic. But it's really cool, man. Yeah. Philosophy is something. I mean, every man should do. In fact, every man does philosophize, but they don't know it. But they don't know it. Yeah. Any question you ask is basically, but how many of those questions have already been asked by every single person that has always existed? I mean, that's what you learn when you study philosophy. ना basically एक होती है history, जिसके अंदर आप events पढ़ते हो कि अच्छा World War I हुई, what were the reasons, what are the events that happened, politics कैसे play हुई, किसने क्या कहा, किसको कैसे क्या खार थी, कितने लोग मरे, पहले किधर अटैक हुआ, and all that. That's history, right? पाकिस्तान की फिर आप हिस्ट्री पढ़ते हो जी, कैसे ईस्ट इंडिया कंपनी आई, फिर थोड़े थोड़े डेमोक्रेटिक एवोल्यूशन आई, हल्का हल्का में रिप्रेजेंटेशन मिली, और फिर हमें डेमोक्रेटिक अवेयरनेस हुई, फिर पार्टीज़ बनी, कांग्रेस बनी, मुस्लिम लीग बनी, एंड they went to this constitutional process of definitely trying to get a country. I mean, that's history, right? But when you study philosophy, what you do is you try to understand how did the human thought at first place evolved. Philosophy, they say, is where, how, what were the first questions asked? Yeah, philosophy is basically thinking about thinking, right? Okay, definitely. So it studies how the human thought evolved from the almost like pre-Socratic times till this day. कैसे शुरू में लोग थे, they had these they believed in myths, mythology or mythological religion बने हुए थे. लोग कहते थे कि यार, कोई पूछता था बच्चा कि यार बारिश कैसे होती है, तो ग्रीस में उसको पेरेंट्स जवाब देते थे कि आसमान पे एक थॉर है जिसके हाथ में एक हैमर है, ही इज अ गॉड, और जब अपना हैमर मारता है तो दे इवन हिंदुइज्म वो भी इसी तरह आपको डिफरेंट गॉड्स और शिवा और ये वो सारे करेक्टर्स बना के जो भी होता है, सूरज आता है वो किस तरीके से कौन सा खुदा निकालता है एंड ऑल दैट. लेकिन फिर एक पॉइंट आया जहाँ पे जो फिलोसफर्स जिनको हम कहते हैं, देयर लाइक यार वी आर नॉट गोना बाय दैट एनी मोर, और वी आर गोना ट्राई टू अंडरस्टैंड दिस वर्ल्ड थ्रू आवर ओन रीजन, थ्रू आवर ओन रीजन अंडरस्टैंडिंग. तो उन्होंने अपनी रीजन को इस्तेमाल करके चीज़ों को जब एक्सप्लेन करना शुरू किया, तो what they came up with were philosophies. What they came up with were philosophies. Yeah. But even those probably could not be explained because of the limitations of language. I mean, again, that's the thing that you can apply anywhere. वो तो फिर मैं कहूँगा कि यार what I'm trying to say cannot be explained due to the limits of language. अगर मैं अपना एक्सपीरियंस आपको 100% कन्वे कर पाता तो you would start thinking as me. Would it be like my क्या कहते हैं incapability of communicating this language, or your incapability of like processing that language? I think it goes both ways. It goes both ways, right? But yeah, at this point I think it's pointless to talk about Wittgenstein's philosophy. I mean, if you start pondering upon the fact that we cannot have a perfect communication, then you just rather go silent and just not speak at all. But just not speak at all. Yeah. Would there be people like that? Would there be people who just do something like that? They'll just take the silent life. I mean, there have been people throughout history. I mean, there have been great people. Even our Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam, he used to go to Ghar Hira for meditation, ताकि मैं पूरी दुनिया से साइड पे चला जाऊँ, एक सुकून पे जाऊँ जिधर मुझे किसी से बात ना करनी पड़े और मैं अपना मेडिटेट कर दूँ. सो पिछले ज़माने में ज़्यादा ट्रेंड था, लोग आइसोलेशन में जाते थे और इट वॉज वेरी नॉर्मल. The fact that our Prophet used to go to Ghar Hira, or it was very normal in that society, is because other people were doing the same thing. Not everybody, but it was totally okay in that society to just go into. It was understandable अगर आप जा रहे हो और आप मतलब meditation करने जा रहे हो. But हमारी आजकल की दुनिया इतनी तेज़ हो चुकी है कि if you isolate yourself, तो सबसे पहले तो एक कॉल आएगी, क्योंकि आपका वो US में बैठा हुआ आपका दोस्त भी आपसे कांटेक्ट कर सकता है. आप उस टाइम पे ये था ना कि चलो घर वालों को बता दिया, if they are understanding you can just go
लेकिन आजकल तो there are a million things that you're doing at the same time and there it is very fast paced, but I think you can like make the time and the effort to like मतलब आप कुछ अपने आप को लोग जाते हैं मतलब अगर मैं गया सवात से आ गया मालम जब्बा हाँ तो उधर मैं गया उधर एक गेस्ट हाउस था आर्मी का ही वहाँ पे एक बंदा था उसने मुझे बताया कि लोग इधर आते हैं हमें अपने फ़ोन दे देते हैं हमें कहते हैं कि यार इसकी बंद करके अपने पास रख लें दे स्टे फॉर 2 weeks कोई फ़ोन कॉल नहीं सुनते कोई कुछ नहीं करते किसी बंदे से रब्ता नहीं करते जस्ट रिलैक्स एंड just जस्ट गो relax बैक and then go तो back. दैट्स द मॉडर्न वे ऑफ डूइंग इट क्योंकि ऑब्वियसली अब बुखारों में जाओगे तो आपकी इतनी ट्रेनिंग नहीं है कि आप you know What would modern philosophy be like though? yeah modern what do you mean by modern philosophy As in like who are like the biggest like contemporary philosophers? What do they talk about आज के ज़माने में? What are the questions they ask? यार आजकल के दौर को क्या कहा जाता है पोस्ट मॉडर्न दौर Postmodern. या अच्छा. मॉडर्न दौर जिसको कहा जाता है तो फिलोसफी में दैट्स पास नाउ Okay, that's like way. द मॉडर्न Oh yeah, because like if you look at the time scale of philosophy, तो फिर Yeah, modern भी yeah. कुछ होएगा, postmodern भी कुछ होएगा. सो मॉडर्निटी जिस तरीके से उसको डिफाइन करते हैं इट वाज द एज ऑफ टॉलरेंस कि मेरा एक ओपिनियन है आपका एक ओपिनियन है लेकिन since I am very civilized, since I am educated person, since I am a gentleman, therefore I have to have the nerves to, you know, some sort of bear with your point of view and tolerate it, and still be friends with you and hang out with, no matter what your thoughts are, no matter what my thoughts are. This is Yeah. modern. That was modern. Doesn't that still exist today? Today it's postmodernism. It's about relativity. Postmodernism कहता है कि जो आप कह रहे हो वो भी ठीक है और जो मैं कह रहा हूँ वो भी ठीक है. Oh. हम दोनों में से कोई भी एक ये नहीं कह सकता कि मैं बिल्कुल ठीक हूँ और आप गलत हो. अच्छा. So I have to internalize this fact that मैं ठीक नहीं हूँ. मैं अपनी जगह ठीक हूँ मैं अपनी जगह और ठीक तुम अपनी जगह ठीक हो. अच्छा. सिर्फ मैं ही ठीक नहीं हूँ बल्कि Yeah. हम दोनों although we are having opposite conclusions and opposite thoughts. But that like weakens us, man. ideologies. Huh? That like really weakens us. That actually weakens us. I mean, if you look at it from a religious point of view, if you try to analyze it, you would say this is the age of hypocrisy. Postmodernism equals hypocrisy. Postmodern, it does. Yeah, क्योंकि hypocrites were the people जो इस साइड पे जाते थे कहते थे यार ठीक है हम आपके साथ हैं you're right, और फिर किसी और के साथ जाते थे कहते थे हाँ you're also right. इसराइल के साथ बैठे होंगे तो कहेंगे यार आप भी ठीक हैं. फ़लस्तीन के साथ बैठेंगे तो कहेंगे हाँ आप पे जुल्म हो रहा है आप भी ठीक हैं ज़्यादती हो रही है. आप भी ठीक है वो हाँ. अभी होता है ना बिल्कुल Yeah. लाइक अभी जो चल रहा है उसमें Yeah. भी यही बात होती है कि लाइक फील सॉरी फॉर बोथ साइड्स. Yeah. What's that about? So that's the hypocrisy at international level. This is a hypocritic time that we're living in. Acha, who are like some contemporary like philosophers who talk about like postmodernity? Yeah. I mean, there's this guy, A.J. Ayer. No, not A.J. Ayer. This guy who wrote a book called A Secular Age. I cannot recall his name. He's Canadian. I mean, he gave his comments about postmodernism. अच्छा. Yeah, but I think आजकल की जो philosophies हैं आजकल जिन लोगों को आप philosopher consider करते हैं आजकल औरतें ज़्यादा आ रही हैं philosophy में. So if you go through this philosophical encyclopedia और आजकल के दौर के prominent अगर आप philosophers ढूंढें तो you'll find women who talk about feminism and stuff. अच्छा. So that's the modern philosophy. That's the modern but philosophy. That's not something that I'm interested in. That's I mean yeah, to each their own, like you said. Yeah. Like you said, to each their own. Yeah. हर कोई अपनी मतलब उसमें होता है. Exactly. That's pretty cool, that's man. that. I mean, there are other people who talk about, this digital age and hyper reality sort of thing. कि आजकल के दौर के अंदर हम एक hyper reality के अंदर जी रहे हैं. By hyper reality he means कि यार हम we can recognize people that we haven't met in our life. Like आप अगर ओबामा आपके सामने आ जाए, आप टर्की जाते हैं उधर सामने आपको ओबामा मिलता है तो you will recognize that person immediately. You'll know facts about him. आप उसको जानते होंगे. You kind of have like a connection with him. Yeah. Even though there is. Yeah. Even though you've like never nothing. met him in your life, right? So that's called hyper reality. Okay. जैसे हमें लोग सुन रहे हैं इस वक्त उन काफ़ी लोग हमसे कभी मिले नहीं होंगे लेकिन if they meet us, people who are listening to us,
they will be able to recognize you. They will already have like a notion about us, Yeah. तो preconceived notion. आजकल इस तरह की भी philosophies आ रही हैं हाइपर रियलिटी अच्छा। के बारे में, about this and that. थोड़ा बहुत लोग ये लैंग्वेज के ऊपर काम कर रहे हैं, लेकिन वैसे ट्रेंड जो है वो पोस्ट मॉडर्न ही है. अच्छा, trend is postmodern. Yeah. That's nice. That's good to know. Yeah. By the way man, like मुझे और कुछ समझ नहीं आ रहा है कि मैं नहीं, किस नहीं। तरीके से कंटिन्यू करूँ इसको. You don't have to pressurize yourself. I mean, it's a casual discussion. But it's like ये जो चीज़ आप फील कर रहे हैं ना, जब शुरू में मैंने होस्टिंग स्टार्ट की थी, हाँ, तो आई यूज्ड टू फील दैट अ लॉट कि यार एक बंदा अपनी एक डिस्कशन कर रहा है, लेकिन जो होस्ट होता है उसके जहन में कॉन्स्टेंटली एक प्रेशर होता है कि व्हाट इज़ गोइंग टू बी माई नेक्स्ट क्वेश्चन, अच्छा. this guy is gonna Oh yeah, because we agreed, by the way, okay, like I'm gonna be the one that interviews. Yeah, I mean you were like यार मैं host बनूंगा, so I was like please be my guest. Yeah. So, that would be nice. Yeah, because like I don't have a lot of experience like philosophy में, and you do. yeah. So I was like, let's get your input into this as well. Yeah, sure. किस किस्म से? I mean I can ask you some questions that I was thinking about earlier, like before starting this podcast. मेरे ज़हन में सवाल आया था कि यार, do you think you are a curious person, that you genuinely have some questions? No, I think I've क्या कहते हैं, मैं पहले तो बड़ा मतलब I wasn't like religious or anything, but Yeah. after I became religious, I became very content. Mm-hmm. I don't ask many questions, and I put that foundation of God before Yeah. anything. So if there is anything that you could know more, Could know more. yeah, I mean, what is the thing that you want to know more about, understand better? Like Religion? our own spirituality, how to achieve A higher state of mind? not a higher state of mind, but a higher state of worship. Mm-hmm. You know, like how to follow those 5 pillars, how to like transcend in prayer. ये वाली चीज़ें मुझे अब मतलब मुझे बड़ा इंटरेस्ट करता है. कुरान मैंने भी पढ़ना शुरू किया है. Yeah. और क्या कहते हैं, and I'm only looking at Islamic philosophers because I want to know their perspectives, like what Yeah. they think about. But it's very like Mm-hmm. tricky stuff, man. तो उसको actually पढ़ने में भी मतलब काफ़ी time लगता है, Yeah. और it's not easy. And as you said कि like no one has the time anymore to do anything like that. But उसके अलावा तो like once I've found like my like you know मतलब peace with religion, तो never, I was very content. मतलब मेरा कभी भी कुछ इस तरीके का कुछ नहीं हुआ कि you know like what is the questions that I'm looking for, like what is the answer to anything. There was like some spiritual thing that I went through, that like some epiphany that I had, and then I realized कि actually this is the path जो सही है, और बाकी सब जो है ना मतलब is all temporary and it's all you know. So at this point your pursuit is to be able to reach that you know transcendental stage in your prayers. In my religion, in my Yeah, prayers, yeah. definitely. So Definitely. you want to achieve that higher state. But I would say like with utmost confidence कि I'm very content. मतलब I don't Yeah. have any like burning desires or burning questions कि भाई क्यों है, क्या है, ये Yeah. सारा कुछ है, भाई बना गया है, बनाया गया I है. think that is मतलब that is the ultimate wisdom. अच्छा. Yeah, I mean, How would you say that though? I mean, if you are curious, a thinking person, he can sit forever and keep thinking. वो नुसरत फ़तेह अली ख़ान की कवाली है, कलाम मुझे भूल गया किसका है, जो कहता है कि यार फ़लसफ़ी बहस के अंदर जा रहा है और सिरा मिलता नहीं. अच्छा अच्छा. यू नो डोर को सुलझा रहा है और सिरा मिलता नहीं. तो ट्रांसलेट प्लीज, ये एक्यूरेट बिल्कुल शेयर नहीं था, लेकिन वो बहस के अंदर जा रहा है. बेसिकली वो ये कहता है कि यार वो डोर को सुलझा रहा होता है लेकिन उसको सिरा नहीं मिल रहा होता. सो यू कैन थिंक फॉरएवर, और वो जो थिंकिंग रोप है यू नो इट एक्सपैंड्स इन्फिनिटली. जितना भी आप इस साइड पे सोचना चाहो इस साइड पे इतना सोच सकते हो कि कहीं भी चले जाओ, और इस साइड पे भी चले जाओ, सोचना शुरू करो राइट पे, उधर भी आप जितना मर्जी सोच लो, आपको उसका एंड नहीं मिलेगा सोच का. इट्स वेरी ट्रू, बिकॉज ये भी एक चीज़ होती है ना कि इट्स लाइक टू थिंक एंड टू फॉर्मुलेट अ कॉन्सेप्ट ऑफ गॉड इन योर माइंड, यू कैंट. वो खुद भी कहता है कि मतलब तुम सोचते सोचते पागल हो जाओगे, लेकिन यू विल नेवर नो.
you know, this is the way I've hidden myself. Yeah. So it's that firm belief कि जब you understand that part, that you go like, if there is like nothing that I can do. हाँ, ये सोसाइटी के अंदर भी यही अलमिया है ना कि यार कुछ लोग सोचते हैं और वो बहुत ज़्यादा सोच जाते हैं, और कुछ लोग हैं जो सोचते ही नहीं हैं. They just follow this herd mentality. Yeah. कि जो सारे बकरियाँ इस साइड पे जा रही हैं तो वही बकरी बन के उसी साइड के अंदर जा रहे हैं, no matter Yeah, what. but the way Islam says it is कि सोचो, think about how like I have created all of this. Yeah. You know, so like actually then what happens is you appreciate rather than to like Islam आपको एक axiom देता है ना कि यार this is I am, God says कि यार मैं तो हूँ, then उसके आगे से start करो, you try to understand me, that's why I created you कि यार understand, look at all the things that I've created and ponder upon continue. them. There is something really crazy though, like this is like very like अब जो ये like this concept of like cities and creation and ये सारी चीज़ें जो है ना, this is like more alienating towards like religion and finding God. Because अल्लाह ने अपनी सारी beauty जो है ना natural चीज़ों में डाल रखी है, जानवरों में, पहाड़ों में, lakes में, greenery में, आसमान में देखते हो तो सारा कुछ नज़र आता है. But now all of that is disappearing. Everywhere you go in cities, you just see like concrete buildings, cars, machinery, metal. So and then you just get stuck in that rat race. True. And then like अब ऊपर आसमानों में भी देखते हो तो like light pollution kills everything in the stars that like makes you think and wonder. So there is like a concept कि मतलब it's alienating living in today's world. Yeah, it definitely is. And interestingly, when you were talking about it, I think there is a fascinating correlation between prime numbers and faith. Okay, explain. Yeah. So what are basically prime numbers? Those who are divisible by themselves and one, right? So we know that 3 is a prime number, 2, 3, 5, 7, 11, so on and so forth. And there is a limit to what we know so far. There is the biggest prime number that humans know as of this day. और इसके आगे कैलकुलेशंस इतनी बड़ी हो जाती हैं कि हमारे बड़े बड़े सुपर कंप्यूटर्स भी अभी तक उससे अगला प्राइम नंबर कैलकुलेट नहीं कर पाए. लेकिन मैथमेटिशियंस दे वुड से दैट देयर आर इन्फिनिट नंबर ऑफ प्राइम नंबर्स. हाँ सही. Yeah, okay, and they cannot come up with a formula of knowing what the next prime number is. Yeah. Right. But is it faith that they're saying that there's infinite? Because they don't know what like the last number is. It's almost something like faith, right? Yeah, it is something like because faith. The way they are used to saying things and telling things is by theories and formulas, right? Yeah. So them saying there is infinite, gravity, but there is something, and this is how we figured it out. This is the formula for it, right? Anything that they say, they just try to back up with some sort of theory, some sort of formula. But when it comes to prime numbers, they cannot come up with a formula, and they would be like, yeah, इससे बड़ा एक prime number है. This is the biggest prime number we know. इससे बड़ा है, definitely है, or infinitely है. You can always expand the numbers, और पीछे और number डालते जाओ, एक prime number आएगा. लेकिन we cannot give you some concrete theory about it. So them saying that is faith. That is faith. That is faith. इसी तरह I think having faith is like finding prime numbers. कि आप किसी भी इंक्वायरी में जाते हो, जैसे हम फिज़िक्स की बात कर रहे थे, कुछ लोग होते हैं जो एक जगह पे स्टॉप कर जाते हैं और कहते हैं कि शायद इससे बड़ा प्राइम नंबर हो ही नहीं सकता. मैंने इतना बड़ा प्राइम नंबर, मैंने इतना नॉलेज एक्वायर कर लिया है, मुझे ये भी पता है, ये भी पता है, ये भी पता है. अच्छा, तो इससे ज़्यादा डेप्थ में तो मैं जा ही नहीं सकता और हो ही नहीं सकता. लेकिन there is always a higher prime number. You just didn't go far enough. You just didn't go far enough. तो it leads back to like वही सोचते रहोगे तो पागल हो जाओगे. Yeah. Just say infinite and exactly. Leave it. Yeah, just say infinite and leave it. मतलब आप बस इस बात पे अकीदा रख लो कि यार there are infinite number of prime numbers, and just like that there is God. Yeah. And just leave it to that. And leave अपने आप को इमाम राजी एक स्कॉलर थे मुस्लिम, उन्होंने अपनी पूरी ज़िंदगी लगा ली to come up with reasons of God के होने के जो दलीलें होती हैं
उन्होंने पूरी ज़िंदगी में वो लिखी कि यार ये दलील है, ये भी रीज़न है, ये भी लॉजिक है हाँ कि खुदा है. एंड व्हेन ही वाज ऑन हिज डेथ बेड ही वेंट इनटू कन्फ्यूजन कि वो सारी जो दलीलें उसने पूरी ज़िंदगी में जमा की थी दे जस्ट कोलैप्स्ड they just collapsed. क्योंकि आपकी Right, लैंग्वेज right. हैड अ लिमिट, राइट? Yeah, that's तो true. उसके बाद ही वाज इनटू कन्फ्यूजन और बड़ा परेशानी में थे. तो किसी उसके ही मेंटोर ने आके उसको डेथ बेड पे कहा कि Yeah, राजी अगर खुदा को मानना है तो बेदलील होके मानना है, इन्फिनिट करके मानना है. basically know that you know nothing and he knows everything. That comes back to Socrates. Okay, he says this. Yeah, that's what he said. Socrates की भी कहानी कुछ ऐसे शुरू होती है. I think we gonna end today's podcast with Socrates because हमारे दोस्त को भी कहीं जाना है. But it was a very interesting discussion today. तो Socrates basically यही कहता है. Socrates की स्टोरी क्या थी कि एक oracle थी एक उनके टेम्पल के अंदर, और टेम्पल के बाहर लिखा होता था नो दाई सेल्फ. तो दैट विल कम टू लेटर. लेकिन वो oracle जो थी टेम्पल में, उसने किसी बंदे से कह दिया, उसने पूछा कि हु इज़ द वाइजेस्ट मैन इन एथेंस. तो उसने कहा सॉक्रेटिस. वो बंदा सॉक्रेटिस के पास आया, कहता तुझे पता है, oracle ने कहा है कि सॉक्रेटिस पूरे एथेंस का सबसे वाइज बंदा है. सॉक्रेटिस कहता है पागल है oracle, मुझे कुछ पता ही नहीं है, आई एम नॉट द वाइजेस्ट एंड आई एम गोना प्रूव द oracle रॉन्ग. तो Socrates went looking for these intellectual people with high ranks. किसी जज के पास चला गया, काजी के पास चला गया उस ज़माने के. उसको कहता है कि यार डू यू नो व्हाट जस्टिस इज़. तो काजी कहता है हाँ मुझे पता है इंसाफ क्या होता है. वो कहता है बताओ क्या होता है. उसने इंसाफ की डेफिनेशन दी और Socrates ने उसको मज़ीद सवाल की उसी डेफिनेशन के अंदर से. अच्छा. वो कॉन्टीन्यूसली उसको क्वेश्चन करता गया और देयर केम अ पॉइंट जिसके अंदर उसकी जो बात थी उसकी पिछली बात से कॉन्ट्राडिक्ट करना शुरू होगी. वो कहता है कि अच्छा अगर तुम ये बात कह रहे हो या तो फिर ये सही हो सकती है या पहले वाली सही हो सकती है. सो every person that he went to who claimed to know something had contradictions in his mind, in his explanations. तो Socrates एंड में फिर थक आके बैठ गया, कहता है yes I am the wisest man in Athens not because I know something but I know that I know nothing, whereas people they also know nothing but they claim to know something. Oh damn. So that's the oracle was right all along. Yeah, so yeah, oracle was right all along. Yeah. Damn, that's cool, man. That's a nice story. Right, so that's the best way to be. I mean, if you're like Socrates, in any field of life. In any field of life, yeah. Not just pretend to know nothing, but in fact, internalize that fact. Yeah. That you know not enough at least. To know not enough. I mean, it's a big part of being humble. Yeah, true. That is it. Sorry about that, man. Should we end this? Yeah, I mean, it was a very nice discussion. अभी I think 40 मिनट्स का मार्क हमने रीच कर लिया. अच्छा, नाइस. सो आज अभी हम एंड पे अपना एक बता देते हैं ऑडियंस को कि it was a very random discussion. Ali bhai was sitting at Soul Cafe and I think that is the beauty of Soul Cafe, that people come around and just socialize with people. Nice. So big shout out to Soul Cafe as well कि वहाँ पे ऐसी environment है that where people can just get along. So I was having tea at Soul Cafe where I met Ali and we just started having a conversation about philosophy. और मैंने कहा क्यों ना नीचे जाके एक recording कर लें. And I was shocked to hear कि you had a studio. And I was like, yeah, let's go do this. So you were very spontaneous and I think life is spontaneous. It was a very wonderful discussion. Yeah, definitely. And, thank you so much for watching the episode. And definitely. And I am subscribed now. Yeah, you are a subscriber now. That's awesome. So, thank you so much, man. Chale, great to do this.